So now we go into the most important part of the chapter. ये सबसे ज्यादा नीट में इस पे से ही क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा. दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. तो बहुत ध्यान से, माउथ में क्या होता है? मैस्टिकेशन. फिर स्टमक में होता है चर्निंग, और इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टाल्सिस. एंड दैट इज फिजिकल चेंज. मैस्टिकेशन बाय माउथ, churning by stomach, and peristalsis by intestine. And chemically, all complex food is made into simple food. Complex is made into simple food by the action of different enzymes. तो अलग अलग एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं. And how is that done? चलिए, let's see. How is digestion done in the buccal cavity? Mastication breaks food into smaller particles. Tongue mixes the food with saliva, and saliva has in it lysozyme. We just did it. Lysozymes are antibacterial in nature. Lysozyme kill bacteria. Where else was lysozyme found? Pannate cells of the small intestine. याद है ना? तो दोनों याद रखना. Saliva में होते हैं lysozyme, and pannate cell of small intestine also has lysozyme. And saliva also has in it ptyalin. What is ptyalin also called as? Salivary amylase. Amylase. And salivary amylase ptyalin breaks down polysaccharide starch into disaccharide maltose. So ये है polysaccharide starch, and polysaccharide starch is broken down by ptyalin into disaccharides which are called as maltoses. तो ये है starch, ये था polysaccharide, और उसको तोड़ के तो कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? Which bonds are broken? स्टार्च में कौन से बॉन्ड टूटते हैं? शुगर में कौन सा बॉन्ड होता है? शुगर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो glycosidic bonds are broken, and starch, which is a polysaccharide, is broken into disaccharides, which are called as maltose. So polysaccharide becomes disaccharide maltose. So that is done by ptyalin. At what pH is it done? 6.8 pH. And what percentage of starch is hydrolyzed? 30% of the starch is hydrolyzed. कितना starch hydrolyzed होता है? 30%. So anybody knows remaining 70% starch कौन hydrolyze करेगा? Pancreatic amylase. Correct. 30% is done by salivary amylase, and 70% is done by pancreatic amylase. ये याद रखना. करेंगे हम लोग आगे. 30% is done by salivary amylase, conversion of starch into maltose. 30% is done by salivary amylase, and 70% is done by pancreatic amylase. So that is starch into maltose. Polysaccharide converted into disaccharide. Correct. And now that starch has been converted into maltose, the bolus form, mouth में bolus बनता है, undergoes swallowing, also called as deglutition. And from buccal cavity, it will enter into the stomach. तो अब stomach में आ जाएगा. Stomach में we have HCl, we have pepsinogen, and we have mucus. What will HCl do? HCl सबसे पहले तो salivary amylase को तोड़ डालेगा. Salivary amylase only 30% starch को ब्रेक कर सका.
It could have broken more starch, but all that extra amylase was destroyed by HCl. तो HCl ने carbohydrate digestion बंद कर दिया. If they ask you in the NEET exam, which digestion is stopped by stomach? Carbohydrate digestion is stopped by stomach. Why? Because salivary amylase is neutralized by HCl. By the way, stomach, you remember, also has in it lipase. जो फैट्स को ब्रेक कर सकते हैं, but HCl also stops the action of lipase. So HCl amylase को stop कर देता है, stops digestion of carbohydrates, and HCl by acting on lipase stops digestion of fats. So न कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो सकते हैं, न फैट्स डाइजेस्ट हो सकते हैं. तो डाइजेस्ट होगा कौन? स्टमक में डाइजेस्ट होगा कौन? प्रोटीन और फैट्स. तो एक ही चीज बची, प्रोटीन्स. तो HCl करेगा क्या? HCl acts on chief cells or peptic cells. And what do chief cells or peptic cells secrete? Pepsinogen. And pepsinogen inactive होता है. HCl converts it into active pepsin. So pepsinogen का ओजन निकल जाता है, and inactive pepsinogen becomes active pepsin, and pepsin acts on proteins and breaks it into smaller pieces called peptones and proteoses. तो समझो ये है प्रोटीन. Protein is a long chain of amino acids. लंबा चेन है अमाइनो एसिड का. About this is a long chain of amino acid. This is called as one protein. By the way, amino acids के बीच में ये amino acids है, इनके बीच में कौन से bonds है? Peptide bonds. And pepsin will break peptide bonds. Pepsin will break down peptide bonds and convert the protein into smaller pieces. So protein छोटे-छोटे piece में हो गया, which is called as proteoses, and smaller pieces which are called as peptones. तो ये क्या था? ये पूरा चेन क्या था? This full chain was called protein. And HCl has broken peptide bond. So now it has become smaller pieces. What is one small piece or a small piece called as? Proteose. And what are the other smaller pieces called as? Peptones. So what are smaller pieces called as? Proteoses and peptones. And mucus is there in the stomach, which has bicarbonate ions, which forms a protective layer over the intestine. Yeah, the mucus and bicarbonate protects stomach from its own hydrochloric acid. तो स्टमक के खुद के HCl से प्रोटेक्शन कौन देगा? म्यूकस. एंड गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, बच्चे के पेट में एक एंजाइम होता है कॉल्ड रेनिन, which will help in digestion of milk protein. Can somebody tell me which is milk protein? Sir, casein.
casein is acted upon by renin, which gets converted into paracasein. And paracasein combines with calcium to form calcium paracasinate. Which is now acted upon by pepsin. तो पेप्सिन है ना, पेप्सिन केजीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. पेप्सिन इजीली केजीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. और बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ केजीन ही पी रहा है. बच्चा तो सिर्फ मम्मी का दूध पी रहा है. और पेप्सिन केजीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. तो ओनली टिल 1 year of life, only till first year, which is the extra chemical given along with pepsin or pepsinogen? Renin. And what will renin convert casein into? Paracasein. Or casein is difficult to break. Casein is difficult to break. But paracasein is simple to break. And paracasein will combine with calcium to form calcium paracasinate. And pepsin can easily break down calcium paracasinate into proteoses and peptones. तो बाकी का डाइजेशन नॉर्मली है कि पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन. बट पहला स्टेप किसने किया? रेनिन ने. रेनिन ने केजीन को किसमें कन्वर्ट किया जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है? इनटू पैराकेजीन. पैराकेजीन किसके साथ कंबाइन हुआ? कैल्शियम. एंड व्हाट डिड इट बिकम? कैल्शियम पैराकेजिनेट. हाँ, पेप्सिन casein was difficult to break, but calcium paracasinate is easy to break. So now who will act after renin is acted? After renin is acted, the normal जो हम लोग के स्टमक में होता है, pepsin will act on calcium paracasinate and convert calcium paracasinate into proteoses and peptones. हाँ या ना? समझ में आ रहा all of you? Good. And then we have digestion in small intestine. Small intestine में you have bile, you have pancreatic juice, and you have intestinal juice called as succus entericus. ये तीनों तीन डाइजेस्ट करेंगे. तो bile, pancreatic juice, intestinal juice, succus entericus. सबसे पहले bile. Bile helps to neutralize acidic chyme. तो bile, if you remember, can you tell me तीन चीजें HCl को न्यूट्रलाइज कर दी है? तीन चीजें HCl को न्यूट्रलाइज कर दी है duodenum में. Can you tell me which three substances help in neutralizing HCl? Mucus, bicarbonates, pancreatic juice, and We had duodenum. And can you tell me three substances which neutralize HCl in the intestine? mucus, bile, एक तो होता है इंटेस्टाइन, डिओडेनम के अंदर ही होते हैं ब्रूनस ग्लैंड. याद है ना, ये अभी अभी किया था. एंड ब्रूनस ग्लैंड गिव आउट म्यूकस which neutralizes HCl, and bile is alkaline. So bile will also neutralize HCl. Bile will also neutralize HCl when it opens by hepatopancreatic duct. What is the pH of pancreatic juice? 8.8. 8.8. So pancreatic juice तो is highly alkaline and it will neutralize HCl in the intestine. So HCl को तीन चीजें न्यूट्रलाइज करती है. Brunner's gland, which is rich in mucus. Bile will neutralize it because bile is also alkaline, and pancreatic juice तो is highly alkaline with a pH of 8.8.
तो all three neutralize the HCl and duodenum के अंदर pH कितना हो जाएगा? 7.8. 7.8. स्टमक में कितना था? 1.8. 1.8. और डिओडेनम में कितना हो जाएगा? 7.8. तो याद रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड, बाइल and pancreatic juice with a pH of 8.8 will neutralize the HCl in the duodenum, and pH of 1.8 will become pH of 7.8. So acidic will become alkaline. Acidic will become alkaline. And then we have bile made up of water, cholesterol, bile salts, bile pigments, and phospholipids, but no enzyme. What is the meaning of no enzyme? What are enzymes? What are enzymes? Proteins. Proteins. Enzymes are proteins. तो जितने भी chemicals है are chemically protein. Amylase is a protein. Renin is a protein. Pepsin is a protein. फिर नाम सुने आपने, trypsin is a protein. Chymotrypsin is a protein. But bile is not a protein. So bile is the only chemical which is not a protein. ये याद रखना, नीट में बहुत पूछते हैं. Which gland does not secrete proteins or enzymes? Liver. Liver gives out bile which has no enzyme, no protein. तो बाइल प्रोटीन से नहीं बनता है, तो बाइल बनता किससे है? Fats. Bile is made up of cholesterol. So bile is a fat derivative. Bile is not a protein derivative. Bile is a fat derivative made up of cholesterol. And bile में दो चीजें होती है, bile salts and bile pigments. Bile pigment and bile salt. Bile salt किसने बनाए थे? ध्यान से, हाँ, ये है लिवर, और लिवर में ये है, याद है, हिपैटिक लोब्यूल्स, अभी अभी किया था. हिपैटिक लोब्यूल में ये है हिपैटोसाइट्स. हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट में बनते हैं बाइल सॉल्ट. तो हम लोग बोलते हैं ना, बाइल जो सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है, यानी एक्चुअली क्या सीक्रेट होता है? बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट सीक्रेट होते हैं. They enter by bile capillary into portal area, into bile duct, into bile duct. So who is entering actually? Bile salts, which are made of cholesterol. और साथ में अगर आपने सुना है, ये एम्प्टी स्पेस कौन था? Sinusoid. साइनोसॉइड. याद है कि साइनोसॉइड में there are phagocytic cells called Kupffer cell. Phagocytic cell called Kupffer cell, जो hepatic lobes के sinusoid में होता है. And Kupffer cell digest old RBCs. जो 120 दिन से ज्यादा हो गए ना, वो old RBC को Kupffer cell digest कर देते हैं. एंड आरबीसी में से बनता है हीमोग्लोबिन. आरबीसी में से बनता है हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन में से बनता है हीम और ग्लोबिन. हीम और ग्लोबिन. उसमें ग्लोबिन अंडरगोज डीअमाइनेशन. ग्लोबिन प्रोटीन है, और लिवर में प्रोटीन का क्या होता है हमेशा? Deamine to form ammonia and urea. And heme
में से बनता है आयन, हीम में से बनता है आयन, और आयन वापस से बोन मैरो में जाता है, आयन वापस से बोन मैरो में जाता है, और बोन मैरो में आयन से बनता है नया बिलीरुबिन, बोन मैरो में आयन से बनता है नया बिलीरुबिन, और हीम में से आता है एक पिगमेंट कॉल्ड एज बिलीवर्डिन। कौन सा पिगमेंट? बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन से बनता है अ पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन। तो पहले बनता है बिलीवर्डिन और उससे बनता है बिलीरुबिन, और उनको कहते हैं बाइल पिगमेंट। तो ये दिया एनसीईआरटी में, व्हाट आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन? बाइल पिगमेंट। Where have they both come from? Breakdown of hemoglobin, which has come down from breakdown of RBC. And who broke the RBCs down? Kupffer cell. So Kupffer cells break down RBC. Kupffer cell break RBC. RBC के breakdown से बनता है hemoglobin. Hemoglobin से बनता है bile pigment. पहले बनता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन, और ये भी बाइल कैपिलरी से आता है बाइल डक्ट में। तो बाइल डक्ट में दोनों आते हैं, बाइल पिगमेंट भी आता है और बाइल सॉल्ट भी आता है। उसमें बाइल पिगमेंट तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि बाइल पिगमेंट तो सिर्फ हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बना। इट विल ओनली गिव कलर टू द फीकल मैटर। आपका इंटेस्टाइन में बाइल पिगमेंट आएगा ना, तो आपका स्टूल्स का कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ स्टूल्स? ब्राउन। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ यूरिन? येलो। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन यूरिन में जाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू यूरोक्रोम, which gives the urine yellow color, and it goes in stools and becomes stercobilin, which gives it a brown color. So urine का yellow color is because of urochrome, and stools का brown color is because of stercobilin. Where have they both come from? Biliverdin and bilirubin. तो बाइल पिगमेंट का काम क्या था? सिर्फ यूरिन और स्टूल्स को कलर देना। दे डोंट हेल्प इन डाइजेशन एट ऑल। तो डाइजेशन कराता कौन है? लिवर का बाइल का काम क्या है? बाइल सॉल्ट्स, नेमली सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये दो वर्ड है ना, आपके बुक्स में लिख लो, लिख लो, ये एनसीईआरटी में लिख लो। Bile salts, sodium glycocolate and sodium taurocolate help in emulsification of fats. That is, they break down fats into smaller particles called micelle. Tell me one thing, carbohydrate digestion किधर start हुआ? Mouth. Protein digestion किधर start हुआ? Stomach. तो इंटेस्टाइन में अभी तक क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ है? फैट्स अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुए हैं। तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले फैट जो डाइजेस्ट हुए ही नहीं अभी तक, और ये भी बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट्स में तोड़ा जाता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग फैट into smaller droplets of fat, is called as emulsification. इसे कहते हैं emulsification. Big droplet
is broken into smaller droplets, which is called emulsification. And those small droplets are called as micelles. तो छोटे छोटे droplets है, उनको क्या कहते हैं? Michelle. But tell me one thing. Has liver done digestion? Has it digested anything? No. नहीं. Saliva में starch became maltose, that was breaking it into smaller polysaccharide into disaccharide. Stomach में protein become proteoses and peptones. So we are breaking bonds. Mouth में glycosidic bond तोड़ा. Starch into disaccharide, maltose. So we broke glycosidic bond. Stomach में proteoses into peptone. So we broke peptide bonds. लेकिन बाइल ने क्या फैट्स का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ा? नहीं, सिर्फ बड़े बड़े ड्रॉप्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, कॉल्ड मिशेल. तो it is not helping in digestion. So again, neat point of view, which part of the digestive system does not help in digestion? The liver. Liver does not do any digestion. It only breaks fats into smaller droplets called micelle. It only breaks fats into smaller droplets called micelle. That's all. And bile activates lipase. Bile activates lipase. ये याद रखना. Bile activates lipase. Now, pancreatic juice. Pancreatic juice में amylase converts starch into maltose. Amylase converts starch into maltose. How much percent? 70%. 30% was salivary amylase. 70% is pancreatic amylase. And lipase. Who activated pancreatic lipase? Bile. Bile salts. Bile salts activate pancreatic lipase. Bile salts activate pancreatic lipase. And lipase acts on lipid. By the way, lipid has already become smaller droplets. What are smaller droplets called? Micelles. Micelles. And pancreatic lipase acts on micelle and converts it into diglycerides and monoglyceride. So, what has bile salts broken fats into? Micelles. Micelle. Bile salts have broken fats into micelle. And what do bile salts do to lipase? Activates. And what does pancreatic lipase do to micelle? Breaks it into diglyceride and monoglyceride. Then we have nuclease. Nucleases act on nucleic acid, DNA and RNA. And nucleases convert DNA and RNA into nucleotides and nucleoside. So can you tell me, ये है DNA और RNA और उसका nucleotide nucleoside बन जाता है. Which bonds are broken? Phosphate के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? Phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds. Correct. Phosphodiester bond टूटते हैं by nucleases and nucleic acid become nucleotide and nucleoside. And nucleotidase acts on nucleotide and converts it into nucleoside. What is the difference between a nucleoside and a nucleotide? Nucleotide has a phosphate group. Nucleoside does not have a phosphate. Correct.
So nitrogen base plus sugar is called as nucleoside, and nucleoside plus the phosphate is called as a nucleotide. So what does nucleotidase break away? Nucleotidase removes the phosphate, और phosphate निकल जाएगा तो पीछे कौन रह जाएगा? Sugar and nitrogen base. And what is sugar and nitrogen base alone called as? Nucleoside. So nucleotidase converts nucleotide into nucleoside. Ha ya na? All of you. And then we have सबसे important. Pancreatic juice breaks down proteins. Intestinal juice में से निकलता है enterokinase. Intestinal juice में से निकलता है enterokinase, which acts on trypsinogen given by pancreatic juice and converts it into trypsin. So pancreatic juice के अंदर से secrete होता है trypsinogen. What does pancreatic juice secrete? Trypsinogen. Trypsinogen is inactive, and enterokinase given by intestinal juice, succus entericus, converts it into trypsin. Trypsin is active. Trypsin is active. So trypsinogen becomes trypsin. Who secretes trypsinogen? Pancreatic juice. Pancreatic juice. And who secreted enterokinase? Intestinal Intestinal juice. mucosa. Do you remember something about this question? Arey Baba, in your paper it was asked. Enterokinase, which chemical converts trypsinogen to trypsin? Enterokinase. NEET 2020, your paper. याद रखना ये. चलो ठीक है. तो enterokinase converts trypsinogen to trypsin, and trypsin acts on proteoses and peptone. याद है ये था proteose और ये था पेप्टोन, और उसके बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उससे और पेप्टाइड बॉन्ड टूटते हैं, तो trypsin breaks more peptide bond and converts proteoses and peptone into polypeptide. तो ये पॉलीपेप्टाइड बन गया. तो सबसे बड़ा कौन था? प्रोटीन. सबसे बड़ा था प्रोटीन. What did pepsin convert protein into? Proteoses and peptones. Proteoses and peptones. And what does trypsin convert proteoses and peptone into? Polypeptide. Polypeptides. ये क्लियर हुआ? तो proteins are converted by pepsin into proteoses and peptone. Trypsin acts on it to convert it into polypeptides. तो प्रोटीन से छोटा कौन बन गया? प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन. और प्रोटियोसिस पेप्टोन से भी छोटा कौन बन गया? पॉलीपेप्टाइड. एंड देन trypsin acts on another pancreatic juice called chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. तो पैंक्रियाटिक जूस से 3 केमिकल सिक्रीट हुए. ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट हुआ जो स्यूकस एंटेरिकस के एंटीरोकाइनेज ने उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया. देन trypsin only converted chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. Chymotrypsinogen becomes chymotrypsin and procarboxypeptidase becomes carboxypeptidase. Chymotrypsinogen becomes chymotrypsin, procarboxypeptidase becomes carboxypeptidase. And chymotrypsin and carboxypeptidase act on polypeptide and convert it into dipeptide. So, Sir, my lecture. Sorry? Yes, sir. Hi, sir. My lecture. 1 minute, sir. 1 minute. Okay. 1 minute, sir. Yeah.
तो पॉलीपेप्टाइड becomes dipeptide. पॉलीपेप्टाइड, ये था पॉलीपेप्टाइड, it will become dipeptide. And then you have succus entericus, intestinal juice. उसमें है disaccharidases. Disaccharidases, maltase converts maltose, याद है, starch became maltose, and maltase breaks down maltose into glucose and glucose. Maltase converts maltose into glucose and glucose. Sucrase or invertase converts sucrose. आपने समझो गन्ने का रस पिया, गन्ने का रस is sucrose. It will become glucose and fructose. या lactase acts on milk sugar, lactose, and converts lactose into glucose and galactose. So maltose is a disaccharide, sucrose is a disaccharide, lactose is a disaccharide, and maltase converts disaccharide into monosaccharide, glucose and glucose, or sucrase or invertase converts disaccharide sucrose into glucose and fructose. Lactase converts disaccharide lactose into glucose and galactose, which are monosaccharide. तो कौन कौन से मोनोसैकेराइड बन गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड बन गए. तो who converts disaccharide into monosaccharide? Intestinal juice. Intestinal juice converts disaccharide into monosaccharide, and intestinal juice also secretes dipeptidase. Intestinal juice also secretes dipeptidase, which breaks down dipeptide into amino acid. तो ये था डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड को तोड़ के लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के उसका बन गया इंडिविजुअल अमाइनो एसिड. इंडिविजुअल अमाइनो एसिड बन गया. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? दैट वाज डन बाय डाइपेप्टाइडेज. एंड लाइपेज converts diglyceride and monoglyceride into fatty acid and glycerol. Lipase acts on diglyceride and monoglyceride, converts into fatty acid and glycerol. And nucleosidase acts on nucleoside to make it into nitrogen base and ribose sugar. So, who does final breakdown of everything? Intestinal juice. Intestinal juice. Disaccharide has become monosaccharide. Dipeptide has become amino acid. Diglyceride and monoglyceride by lipase are converted into fatty acid glycerol. And nucleoside is converted into nitrogen base and ribose sugar. तो ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया, गैलेक्टोज बन गया, अमाइनो एसिड बन गया, फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, नाइट्रोजन बेस बन गया, राइबोस शुगर बन गया. Everything is finally broken by intestinal juice. So we'll end the lecture with a very nice word, which is the first breakdown. Mouth, salivary amylase. Then breakdown is stomach, protein. Then bile, fats into Michel. Then pancreatic juice. Bile salts activate lipase. Last breakdown is done by intestinal juice. Have you all understood this? Everybody. So next session, I'll just maybe glimpse through absorption and utilization. 5-10 minute लगेंगे next session में. We'll get it done. चलो, take care. Bye bye. See y'all.